आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप मोबाइल फ़ोटो को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे रिमूव करते हैं तो आप मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट जरूर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सबसे पहले आपको आना होगा स्नैपसीड ऐप पर। आने के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर हीलिंग टूल मिलेगा। हीलिंग टूल को आप इस पर ड्रॉ कीजिए तो आपका सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, सो रिमूव हो जाने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर लो अपने गैलरी पर। ओके, सो गैलरी पर सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट तरफ पर जो है वो फोटोशॉप टच के लिए है और जो राइट साइड पर है वो पिक्सार्ट के लिए है। जो लोग पिक्सार्ट से कंफर्टेबल है वो राइट साइड की ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और जो लोग पिक्सार्ट नहीं यूज़ करते वो लोग लेफ़्ट साइड को ज़रूर देख सकते हो। सो देखो कैसा एडिट होता है यहाँ पर।
करने के बाद आप इस पिक्चर को इंपोर्ट कर लीजिए लाइटरूम ऐप पर। तो लाइटरूम ऐप पर इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कॉपी भी कर सकते हो। सो फाइनली हमारा फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है। बाद सबसे आखिर में फ़ोटो कुछ ऐसा लगता है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।